Welcome to this lecture on Fundamental Theorem of Calculus 2 by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So, yesterday we started with fundamental theorem of calculus 1, right? So we did two Yes, theorems. sir. Sir. We did two theorems. First was fundamental theorem of calculus 1, and then we also did integration by parts, right? So today we will do the part 2 of fundamental theorem calculus. Okay, the second version of fundamental theorem of calculus, which states that the integration and differentiation are reverse of each other, are inverse of each other. Okay, so this is the statement of fundamental theorem of calculus 2. So f is any integrable function, so we are taking the function to be integrable, small f, and we are defining the capital F to be the integral function of f, small f. Okay, so capital F is the integral function of small f. Then the integral function is always continuous, right? Whatever f may be, the integral function f is always continuous. Moreover, if your small f is continuous at some point, then the capital F is differentiable at that point, and the derivative of the function f at that point is equal to the value of the small f at that point. Okay. Yeah, so basically what it means is when you will integrate f, you will get capital F, and when you will differentiate capital F, you will get small f. So that means they are inverse of each other, right? Is it right? Yes, sir. Yes, sir. So let us start with the proof of this theorem. Okay, we're going to prove this theorem. So first we are given that the function is integrable, so it is bounded, right? Since f is integrable on AB, so the function f is bounded on AB, that is, there exists k greater than 0 such that mod fx is less than equal to k for all x belonging to the closed interval AB, right? Yes, from boundedness we get a positive real number k such that mod fx is less than equal to k for every x in AB. Is it fine? Yes, sir. Okay, now take any, so now because we want to show the continuity के लिए क्या show करना होगा? Continuity, in fact we will show uniformly continuous. ठीक है, continuity भी नहीं show करेंगे, हम show करेंगे the function is uniformly continuous. और uniformly continuous के लिए क्या होता है? Just wait a minute. Mod of fx minus fy less than equal to mod x minus y for x comma y belong to R. सर आप म्यूटेड हैं। Okay, so we wanted to prove uniform that the function is uniformly continuous, right? So we will start with any arbitrary epsilon और उसके corresponding हमें कोई delta find करना है. So we take delta equal to epsilon by k, which is greater than 0. So now we start with any xy in AB, and we will try to show that
mod fy minus mod fx is less than equal to is less than epsilon whenever your x minus y is less than delta, right? Is it right? So this is ft dt minus a2x ft dt. So what will be this? Yes, हमने करा हुआ ये. अब यहाँ पे क्योंकि हमने, so this can be written as ft dt, right? Can we write like this? Yes, sir. ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने ये कन्वेंशन यूज करा था. हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने तीन चीजें कन्वेंशन डिफाइन करी थी. एक तो ये करा था एक्स वाई एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई एक्स एफ, राइट? रिमेम्बर? इसके वजह से हम ये कर पा रहे हैं. और हमने ओपन इंटरवल में भी डिफाइन कर लिया था, सो वो सब काम हम कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स वाई मॉड एफ टी डी टी, राइट? ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी. दिस रिजल्ट. व्हाट नेक्स्ट? अब mod ft is less than equal to k, right? Since ft is less than equal to k for all x belonging or t belonging to ab, ठीक है, और xy हमारा इसके अंदर है ab के अंदर है. So ये क्या हो जाएगा? This will be equal to k times y minus x, right? Yes, sir. इनफैक्ट यहाँ पे मोड लगा दो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, सो एक्स वाई ये नेगेटिव ना हो, इसलिए यहाँ पे मोड लगेगा ही. ठीक है. सो दिस विल बी k टाइम्स y माइनस x या x माइनस y, जो भी लिखना चाहो. So which is less than epsilon whenever mod y minus x is less than delta, right? अगर mod y minus x को हम less than delta लेंगे तो delta is epsilon by k, so it will become less than epsilon. So hence f is uniformly continuous on ab. So uniformly को ब्रैकेट में डाल दो कि कंटिन्यूस है. ठीक है, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चाहिए थी. बस हमने तो एक स्टेप एक्स्ट्रा दिखा दिया कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, खाली कंटिन्यूस नहीं है. इज इट फाइन? यस. सो व्हाट वी हैव शोन अप टिल नाउ, हमने क्या शो कर दिया? ये शो कर दिया, ये पार्ट शो कर दिया. नाउ वी हैव टू शो दिस सेकंड पार्ट. सो वी हैव टू एज्यूम f is continuous at x naught and we have to show that f is differentiable at x naught and the derivative is equal to fx naught. So ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है. मतलब उतना भी ट्रिकी नहीं है. So assume that f is continuous at x naught. To show f is differentiable at x naught and f dash x naught is equal to fx naught, ये शो करना है हमें. So for this differentiability शो करने के लिए क्या करना होगा? बताओ, what is the definition of differentiability? Yes. So fx minus f at x naught upon x minus x naught minus L less than epsilon. Yes, हमें ये शो करना होगा basically x naught fx minus fx naught upon x minus x naught should exist and this should be equal to L. क्या होगा हमारा? ये होगा L, right? क्योंकि हमें शो करना है f dash x naught is equal to fx naught. हमें बेसिकली ये शो करना होगा, ये लिमिट, राइट? सो हम इसको Yes, शो sir. करेंगे. और लिमिट की डेफिनेशन के लिए क्या करना होगा? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there should some exist some delta such that
mod of this minus fx naught is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta. So वो show करना है. So उसके लिए we will start with epsilon. So let epsilon greater than 0 be any real number. Now since f is continuous at x naught, so there exists delta greater than 0 such that क्या होगा definition continuity क्या होती है fx minus fx naught is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta, right? Is it fine? Now consider for x not equal to x naught, ठीक है, and x minus x naught less than delta. So वे हमें ये इसका लिमिट शो करना था, तो इसलिए इससे ही स्टार्ट करेंगे. We will try to show that this is less than epsilon. This is less than epsilon. हमें वो शो करना है, right? So what we can write this can be written as 1 by x minus x naught times, ठीक है, fx minus fx naught. Fx is a to x ft dt minus a to x naught ft dt minus, now this I can write as, यही trick है यहाँ पे, this is the trick that we are going to use. I am writing fx naught equal to what you can write here, x naught to x1 dt. Is it fine? ये ट्रिक है हमें. fx naught को we can write like this, क्योंकि इसका इंटीग्रल करोगे तो you will get x minus x naught. So x minus x naught will get cancelled and you will be left with fx naught. Is it fine, everyone? This is the trick you have to remember. So this is the trick that we are going to use. Now we can club these together. So whenever you can take x minus x naught outside, this will be x naught to x ft dt minus this fx naught can be taken inside because it is independent of t, so we can write it as x naught to x fx naught dt. So this is constant, right? So this I can write as, अब इन दोनों को क्लब कर लोगे तो you will get x naught to x ft minus fx naught dt, right? Which is less than equal to, so now we can use this mod अंदर ले जा सकते हैं हम, right? अभी हमारा t कहाँ पे है? This t, where it is lying? Yes. X naught to x. and x naught. T is lying between x naught and x, right? And distance between x naught and x is delta. हमने जो start करा था, we took the distance between x and x naught to be less than delta, and t is lying between them, so distance between t and x naught is also less than delta, right? Yes, sir. और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो a पार्ट है अपना, a में क्या है, अगर whenever there is an x whose distance is less than delta from x naught, then the distance between their images is less than epsilon. So हम a में t से t को replace कर सकते हैं, and we can use a here. So using a, what you will get is
1 by x minus x naught to x epsilon dt. So what we have used is using a t lies between, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा ये नहीं पता, तो t lies between x naught and x minus x naught is less than delta. So this implies t minus x naught is less than delta. और हमने t minus x naught less than delta है तो हमने a को यूज कर लिया, दिस इज एप्सिलॉन, t नहीं है ये एप्सिलॉन. So we can take, अब ये constant हो गया, so you will get this equal to epsilon, right? Because when you will integrate, you will get epsilon times x minus x naught, and x minus x naught will get cancelled. So you will get this. Okay? So hence fx minus fx naught by x minus x naught minus fx naught is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta. Thus limit x tends to x naught fx minus fx naught by x minus x naught is equal to fx naught, that is f is differentiable at x naught and f dash x naught is equal to fx naught. Is it fine everyone? So the main trick in this proof is this this manipulation. यहाँ पे ये याद रखना है, this is the trick. ठीक है, इसको याद रखना है. देन उसके बाद तो उतना टफ नहीं है, उसके बाद तो सिंपल मैनिपुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है. सो मेन ट्रिक यही है, अगर ये भूल गए तो फिर यू वोंट बी एबल टू मैनिपुलेट, राइट? क्योंकि ये फॉर्म नहीं ला पाओगे, ये फॉर्म नहीं ला पाओगे तो इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस नहीं कर पाओगे. इज इट फाइन? यस सर. ओके, सबको प्रूफ क्लियर है? कोई डाउट किसी को? Let us take the let us do another theorem. So it is change of variable theorem. Change of variable theorem क्या होती है, किसी को पता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते थे, क्या करते थे उसमें? यस सर, एक्स को यस कोई सर. जैसे y variable- इक्वल टू हम cos x ले लिया हमने, तो फिर हम क्या करते थे, dy by dx निकालते थे, दैट इज इक्वल टू sin x, या dy इक्वल टू sin x cos x माइनस sin x dx, राइट? एक तो dy को रिप्लेस करते थे, और साथ में जो वेरिएबल, जैसे अगर हमारा a टू b cos x dx है, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा? अब y अगर इक्वल टू a है, सॉरी x इक्वल टू a है, तो y क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? cos a, एंड x इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू cos b. तो हमारा ये क्या हो जाता था? cos a टू cos b माइनस sin x कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि इसको y के फॉर्म में लाना है, इधर ये 1 बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा ना. सो साइन एक्स कैन बी इन y की फॉर्म, ये साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट? सो 1 माइनस y स्क्वायर. सो ये इस तरह से हम चेंज कर देते थे, राइट? रिमेंबर? सो बेसिकली हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, हमने वेरिएबल फ्रॉम x टू y कर लिया. सो दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल. इज इट फाइन? सो ये fa हो गया, ये fb हो गया. y इक्वल टू अगर fx लेंगे हम, तो ये fa fb और ये सारा अपना इस तरह से हो जाता है, राइट? सो दैट रिजल्ट वी आर गोइंग टू प्रूव इट टुडे. ठीक है, वो रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम और सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग t इक्वल टू fx. तो dt क्या हो गया? dt इज इक्वल टू हो गया
f dash x dx, right? So f dash x dx can be replaced by dt, fx is replaced by t, right? और ये a t goes to a implies, sorry, x goes to a implies t goes to fa, and x goes to b implies t goes to fb. So ये पूरा चेंज हो गया. Is it fine? Using substitution t equal to fx, हमें ये फॉर्मूला आ जाता है. ठीक है, इससे ये वाला फॉर्मूला आ जाता है. ठीक है, बट वी आर गोइंग टू प्रूव इट. Is it fine, everyone? Yes, sir. Okay, so let us prove it. इसको ट्राई करते हैं. So f is differentiable function on an open interval j such that f dash is continuous. ठीक है, so derivative is continuous, that is f is continuously differentiable function, and I is an open interval such that fj is contained in I. So I is and again is an open interval such that range of f over j is contained in I. If g is continuous on I, अगर g continuous on I है तो g of f is continuous on j, right? ये तो किससे हो गया? This is by algebra of continuous function, right? Composition of two continuous function is continuous. So g of f तो उससे continuous हो गया और g of f continuous हो गया, and for any a b belonging to j, ये result हमें prove करना है. This we can prove using fundamental theorem of calculus 2. Okay, so let us start. So since f is continuous on j, g is continuous on I, and fj is contained in I, so by algebra of continuity, g of f is continuous on j, right? क्योंकि तुम्हारा बस अब हमें ये शो करना है. सो इसके लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करनी है. सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू डिफाइन सम फंक्शन, सम इंटीग्रल फंक्शन, राइट? तो इंटीग्रल फंक्शन क्या डिफाइन करोगे? यस, so define g from I to R as, let's see, belonging to I be any arbitrary but fixed point. कोई भी एक फिक्स पॉइंट कर लिया हमने. ठीक है, सी आई में से, आई में से कोई भी एक पॉइंट पिक कर लिया. इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं. Let C belonging to I be any point, any fixed point. ठीक है, कोई भी पॉइंट फिक्स कर लो. C के टर्म्स में डिफाइन कर लेंगे हम. डिफाइन G from I to R as G of Y is equal to C to Y GT. ठीक है, is it fine everyone? Yes, sir. अब G क्या दिया हुआ है हमें? G is given to be continuous, और G continuous है तो क्या होगा? By fundamental theorem of calculus, since G is
continuous on I. So by fundamental theorem of calculus 2, G is differentiable on I and G dash Y is equal to gy for all y belonging to I. Is it fine? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहते हैं कि जहां जहां अपना इंटीग्रेंड कंटिन्यूअस होगा वहां वहां हमारा इंटीग्रल डिफरेंशिएबल होगा. तो यहाँ तो g is continuous on every point in I, so g will be capital G will be differentiable at every point in I. Moreover, j dash y will be equal to gy, right? Is it fine? Yes, is it fine? Yes, sir. Okay. Now define another function h from j to r as h is equal to gof on j. ठीक है. So h is equal to gof define करा हमने. That is, we have taken the composition of g, capital G and small f. Now what will be h dash x? Then as both f and g are differentiable, so h is differentiable, and by chain rule h dash x will be equal to, क्या हो जाएगा h dash x? g dash fx into f dash F x, X. right? और g dash क्या है हमारा? Since g dash y is equal to gy for all, right? या इसको एक नाम दे दो और बस सीधे लिख दो from a. Call it as a. ठीक है, is it fine? So h dash x is equal to g of fx into f dash x. Now by fundamental theorem of calculus 1, क्या हो जाएगा हमारे पास fundamental theorem of calculus 1? A to b h dash x dx will be equal to, yes, what will be this? कल कराया हमने, डेरिवेटिव को इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या आता है? hb minus ha, right? These 2 points. So that is, अब h dash x की वैल्यू डाल दो. It is g of fx dot f dash x dx is equal to hb is g of fp minus g of fa. So this is g of fp is integral c to fb gt dt minus c to fa gt dt, which is nothing but fa to fp gt. So hence proved. Is it fine everyone? So यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है इसको प्रूव करने के लिए. First is we have to remember that we have to define this function g in this way. So we have to fix some any point you can fix. ठीक है, ये कोई भी point ले सकते हो interval में. So you can fix some point and you can start, you can define this function g. और फिर एक और function लो h, which is composition of the function capital G of f, and then you just apply chain rule और उसके बाद fundamental theorem of calculus 1. Fine everyone? Yes, sir. Fine.
So we've done 2 theorems for this. Now let us try to prove some results based on these 2 theorems. यहाँ पे तुम्हारे यही 3 theorems है मेजर जो इसमें हैं. First is fundamental theorem of calculus 1. Sorry, 4 theorems. Fundamental theorem of calculus 1. Then change. Second is what was the second theorem? Which we did yesterday. What was that? Integration by parts. Yes, integration by parts. And then third is your fundamental theorem of calculus 2. And then fourth is this change of variable. So तुम्हें ये 4 theorems को इसी तरह से यूज करना है. ये इसको डायरेक्ट उस तरह सब्स्टिट्यूशन की तरह मत स्टार्ट कर देना एग्जाम में. अगर ये थ्योरम यूज कर रहे हो, यू हैव टू ब्रिंग इट इन दिस फॉर्म टू अप्लाई दिस. ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस. ठीक है, Okay, sir. अभी करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल सी हाउ वी विल अप्लाई. सो डायरेक्ट वो नहीं अप्लाई करना, पूरा इस फॉर्म में लाके ही अप्लाई करना है. So I was giving you this question. So first, let G be bijective differentiable function on an open interval I. Let J equal to Gi. Then G dash G inverse is differentiable on J. And for any AB belonging to I, AB Gx dx is equal to plus this is equal to B of Ga minus A of Gb. Okay. So let us try to prove this question. So G dash is differentiable. This we have done in our previous semester. कि अगर कोई भी bijective function है which is differentiable, then its inverse is also differentiable, right? Inverse function theorem. What was that? What was the name of that theorem? So we know by inverse function theorem that G inverse is differentiable on the. ठीक है, so ये हमें prove करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. This is from the last semester, so we can use this fact. So just call it as inverse function theorem. So उससे हमारे पास आ गया G inverse is fine. So now we have to prove this. Okay, so we will start with this term and we will try to do some manipulation to bring it into this form. Is it fine? Yes, sir. So consider GA, GB, G inverse T, dt. So what we can write as, this can be written as One by G. by inverse function, by fundamental theorem, sorry, by change of variable theorem. GA, GB, so क्या substitution use कर रहे हैं वहाँ पे? This is equal to A to B, ठीक है? A to B, A to B, G inverse of G, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, G inverse of GT dot G dash T dt. ओके, सी ये है ना, तो यहाँ पे G की जगह G इनवर्स है और F की जगह G है. सो G की जगह G इनवर्स, F की जगह G. इज इट फाइन? Yes, sir. बाय चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम. ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट A to B. व्हाट इज दिस? G इनवर्स ऑफ G इज T डॉट G dash T dt. अब क्या करना होगा हमें? We will have to apply integration by parts, right? So integration by parts से क्या आ जाएगा ये? If you remember, integration by parts क्या था? It was this A to B F G dash plus A to B F dash G is equal to FP GB minus FA G. So अभी हमारे पास ये इस फॉर्म में है, this
फॉर्म में, ये एक टर्म है ये वाला, सो ये वाला टर्म को हम लेफ्ट में ले जाएंगे माइनस में, ठीक है, और ये पूरा अप्लाई कर देंगे. इज फाइन. सो दिस कैन बी रिटर्न एज एफ बी. एफ हमारा टी है तो ये हो जाएगा बी जी बी माइनस ए जी ए माइनस दिस टर्म a to b, derivative of t is 1, right? और ये g हो जाएगा gt dt, ठीक है, इन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम. डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो देन आप इसको रिफॉर्मुलेट करोगे, ये वाले टर्म को यहाँ पे ले जाओगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. बस सिंपल है, a to b gt dt प्लस ga to gb g inverse t dt is equal to bgb minus aga. Is it fine? Is it fine everyone? Yes, sir. So इस तरह से अप्लाई करना है तुम्हें. चलो ट्राई दिस फंक्शन, इसको प्रूव करो. आई एम कमिंग, ठीक है, इसको सोचो. Just think over this. So okay everyone, how you will do this question? Yes. अब इसका fx is your x minus 1 x plus 1 ft dt. अब is there any function for which ये दो वैल्यूज आए? नहीं आएगी, राइट? सो क्या करना चाहिए हमें? सी, अब ये हमारे इस फॉर्म का नहीं है ना. अगर ये फॉर्म होता तो हम कुछ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते. जैसे अगर ये हमारा इस फॉर्म का होता जी ए जी बी एफ टी डी टी, तो हम इंटीग्रेट, ओ सॉरी, चेंज ऑफ वेरिएबल से हम इसको ए टू बी एफ ऑफ जी टी डॉट जी डैश टी डी टी कर देते, राइट, बाय चेंज ऑफ वेरिएबल थ्योरम, राइट. बट इट कैन यू फाइंड सम टू नंबर्स फॉर व्हिच ये दोनों वैल्यूज नहीं आएंगी. सो व्हाट वी विल डू इज, यस, वी विल स्प्लिट इट. ये दो फंक्शन अलग अलग फंक्शंस हैं तो हम इसे बीच से स्प्लिट कर लेंगे. इज इट फाइन? To show it is differentiable, consider fx equal to x minus 1 x plus 1 ft dt, so which can be written as x minus 1 to 0, या इसको हम इस तरह से बैठ, हाँ चलो, एक 0 to x plus 1 ft dt plus x minus 1 to 0 ft dt, so which is nothing but 0 to x plus 1 ft dt minus 0 to x minus 1 ft dt. ठीक, अब क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन मान लेंगे, इसको एक फंक्शन मान लेंगे. सो डिफाइन लेट gx equal to x plus 1 hx equal to x minus 1 for all x in R. So g will take 0 at what value? Yes, ये 0 किस पे आएगा? g पे 0 कब आएगा? Yes, what value of x will give you 0? Minus 1, right? And this is g of x ft dt minus, this is 1, so h of 1 h of x ft dt. So this is now minus 1 to x f of gt
g dash t dt minus 1 to x f of ht h dash t dt using change of variable. So now we have to show that f is differentiable. F is differentiable means key integrand should be continuous. Both the integrand should be continuous. Is it continuous? Gx क्या है? G is x plus 1. So g dash x is 1, which is constant function. So continuous, right? H is also constant function, continuous. So g dash is continuous, h dash is continuous, g is continuous, h is continuous. And what about f? F is also a continuous function. So by algebra of continuity, since g, g dash, h, h dash, and f are continuous functions, so by algebra of continuity, g of f of g dot f of g dot g dash and f of h dot h dash are both continuous functions on their respective domains. ठीक है? So what this implies, by fundamental theorem of calculus 2, क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेंड माइनस 1 to x f of g dot g dash and integral 1 to x f of h dot h dash are differentiable functions, right? ये दोनों integral are differentiable. Whenever your integrand is continuous, the integral is differentiable, right? So these are differentiable functions. Consequently, by algebra of differentiability, fx is differentiable on कहाँ से कहाँ है x r में, so on r, and f dash x is equal to this function minus this function f of g dot g dash x minus f of h dot h dash x for all x belonging to r. ठीक है? Is it fine? So which is nothing but, what is this? f of g, या इसको यहीं पे वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, एक स्टेप आगे, या यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल लगा के यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते थे, फिर ये g डैश और h डैश रहता ही नहीं क्योंकि 1 हो जाता है ना वो. You can put the values, so this becomes f of x plus 1 dot 1 minus f of x minus 1 dot 1, so which is equal to f of x plus 1 minus f of x minus 1. Hence the question. Is it fine everyone? This is how you have to do such questions. So तुम्हें इस फॉर्म, इन फॉर्म्स में लाना पड़ेगा किसी तरह, हमारे जितने भी थ्योरम्स की फॉर्म है, और देन यू कैन अप्लाई योर रिजल्ट्स. ठीक है? Is it fine? Is it clear? Yes, is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, so this much is enough for today. Any questions anyone want to ask? अभी तक में से कुछ पूछना है? Okay. So I'm ending this class now. Bye everyone. Have a good day. Thank
Thank you for watching this video. To stay updated, please subscribe to our YouTube channel, Cosmos Learning. Happy learning through Cosmos Learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.